Now let's learn Crammer's rule once after understanding what exactly was the determinant. Crammer's rule क्या है? See, it's very simple. Let's start. Crammer's rule start करने के पहले let's understand what are the steps we must use to solve any equation for by a Crammer rule. तो Crammer's rule में step number 1 is same like what we used to do. The step number 1 is arrange the equation in standard form. Now children, what was standard form? Ax plus by. रिमेंबर फॉर सॉल्विंग पर्पस कांस्टेंट टर्म राइट साइड में होना चाहिए, मतलब x और y लेफ्ट साइड में होना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म किधर होना चाहिए? राइट साइड में. ओके, सो फर्स्ट दोनों इक्वेशन को विल अरेंज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 ओवर हियर इज विल फाइंड थ्री डिटरमिनेंट्स. नाउ टिल नाउ डिटरमिनेंट देते थे अपने को, दे यूज्ड टू गिव अस डिटरमिनेंट. अभी वी हैव टू फ्रेम डिटरमिनेंट पहले एंड देन विल सॉल्व. नाउ व्हाट आर दिस डिटरमिनेंट कॉल्ड? लेट्स सी फर्स्ट. दिस आर कॉल्ड एज d, dx and dy. D is the determinant which is made by the coefficient of x and y. Dx is the determinant of x and dy is the determinant of y. What is that? We'll see when we'll start with the sum. So this was step number 2. Fine. Step number 3 is make use of Crammer's rule. Now this Kramer is a very famous mathematician. What his rule says to us? That in order to find the values of x and y, we have to use a very simple equation. And that equation is x is equals to dx upon d. It's very simple. Y is equals to dy upon d. Okay. By using this rule, we'll simply get the value of x and y. See why we are solving all of this? Just to get only the values of variable x or y. Solve का मतलब ही क्या है? What is the main मकसद to solve the equation? To get the values of variable. And we get the values of variable by using Crammer's rule as x is equals to dx upon d, y is equals to dy upon d. These are the steps of Crammer rule, or these are the steps which we have to use while solving any problem by Crammer rule. Let's see the first sum. वो sum exam में कैसे पूछेंगे? The sum is very simple. The first sum, pay attention. They are saying solve the following equation by Crammer's rule. They'll mention the name of the rule and then only we are supposed to use this. Fine. Next, let's see the first sum. First sum is x plus 18y is equals to x plus 18 is equals to 2y. And second equation is y is equals to 2x minus 9. So what was step number 1 if you remember? Write or arrange the equation in standard form. मतलब x और y किधर होना चाहिए? Left side में. Constant किधर होना चाहिए? Right side में. First equation उठाते हैं. Let's start with that. First equation is x plus 18 is equals to 2y. x left side में ही है. 2y the variable वाला term right side में. Let's bring on that left side. तो क्या मिलेगा? Plus 2y equal to के उधर से इधर लेके आया तो it becomes minus 2y. And this constant term को इधर शिफ्ट करते तो plus 18 उधर से इधर आया तो minus 18. This is the first task. First equation को हमने standard form में लाया. अभी second की बारी. Second equation क्या है? y is equals to 2x minus 9. Let's arrange. x को उधर लेके जाते हैं पहले. मतलब 2x वाला term उधर गया. तो what is the sign of 2x? अगर इसके आगे कुछ sign नहीं है तो क्या है? Plus. So plus 2x उधर भेजा तो क्या हो जाएगा? It becomes minus 2x. Now what is sign of y? It is plus and वो left side में ही already. So let's write plus y is equal to इधर क्या आएगा? Minus 9. Fine. So this was the first step, arranging equation in standard form. Equation को हमने standard form में arrange कर दिया. Next step, remember step number 2 was find three determinant. The first is d, the next is dx, the next is dy. Let's start with the determinant of d. How do we frame determinant? अब क्या है ये determinant कैसे बनाने का? We'll write in two vertical line. Now remember हमारे पास दो रो और दो कॉलम होते हैं. First row is for first equation के लिए, second row is for second equation के लिए. उसी तरह first column d determinant में first column में we'll write the coefficient of x and second column में we'll write the determinant of y. What I'm saying? Let's see. Either we have to write coefficient of x. First equation में x का coefficient क्या है? 1. सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? स्पीक अलोंग विद साइन -2. तो वो दोनों को इधर लिखेंगे 1 एंड -2. अच्छा, इधर फर्स्ट कॉलम में हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा तो दूसरे में क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ y. तो इधर कोएफिशिएंट ऑफ y चेक करते हैं इक्वेशन में. व्हाट इज अलोंग विद साइन? यहाँ पे -2 and here it is +1. if you are not saying or writing plus that's fine, but for minus we have to. So यहाँ पे क्या आएगा? -2 and 1. So this is the starting point of learning Crammer's rule. Make sure you understand. क्या किया मैंने? Once again, determinant D में पहले आएगा coefficient of x, फिर आएगा coefficient of y.
सो दिस इज फर्स्ट डिटरमिनेंट. अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये ऑलरेडी अपने को आता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. लेट्स स्टार्ट. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्रोडक्ट माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय -2. सो व्हाट डू आई गेट? 1 1 जा 1 -2 -2 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस. तो ब्रैकेट के अंदर इट्स प्लस ओनली, बट इसकी वजह से इट बिकम्स -4. 1 minus 4, the answer will be -3. Okay, so that was first determinant. Next determinant, that is dx. इसका नाम क्या है? Determinant of x. How do we spell? How do we say determinant of x? Now children, how to form this second determinant? See, it's quite simple. Make use of first determinant. इसको copy करने का and इधर paste करने का. Now, but there has to be few changes. थोड़ा change करते हैं. It is determinant of x ना, तो इधर जो डिटरमिनेंट डी था उसमें जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x था हम उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से. कांस्टेंट कौन है? जो राइट साइड में था. ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है? -18 और -9. मतलब इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं? -18 और -9. दिस इज द स्लाइड चेंज. ओके, सो वंस अगेन, व्हाट इज डिटरमिनेंट? व्हाट इज dx? डिटरमिनेंट ऑफ x. To write determinant of x, will make use of determinant d. उसमें x के कोएफिशिएंट को किससे रिप्लेस करेंगे? Will replace by constant term. Now solving part is very simple. Start. -18 multiply by 1 minus -2 multiply by -9. So -18 into 1 -18 minus -2 into -9 -18. So minus minus plus 18 और 18 को प्लस किया तो 36. Answer is -36. So that was second determinant. Now it's your job and your task. Please help me out. Determinant y कैसे बनाएंगे? Tell me. First we'll write two vertical line. Determinant y मतलब dy मतलब determinant of y. वापस इसको सेम कॉपी पेस्ट करते हैं. What could be the possible change? इसमें coefficient of y की जगह पे will replace by constant term, that is -18 and 9. See, यहाँ पे मिस्टेक होता है. What I'm saying is every time for dx as well as dy make use of d. क्या मिस्टेक होता है? While writing dy, some of the students mistakenly take dx and then replace. That's wrong. For every determinant dx and dy, make use of d only. Okay? Now let's carry forward. आगे तो आता है 1 multiply by -9, -18 multiply by -2. So 1 multiply by -9, -9 and minus plus. Now 18 to the 36. Minus वापस plus. 36 plus 9 gives me 45. Sign of greater number. -49 is the 45 is the answer. Now d मिला, dx मिला, dy मिला. But we have to find क्या? उन्होंने बोला था solve. Solve मतलब find the values of x and y. So how do we find x and y? Write that sentence, or by using which law or which rule? Crammer's rule. So what is Crammer's rule? By Crammer's rule, x is equals to, come on, dx upon d and y is equals to dy upon d. तो dx का वैल्यू क्या है? चेक. dx का वैल्यू क्या है? -36. तो उधर -36. d का वैल्यू क्या है? -3. ओके, नाउ सिंपली सॉल्व दिस फ्रैक्शन. माइनस माइनस कट. 36 डिवाइड बाय 3. 3 1 3 12 जा. तो x का वैल्यू आया 12. y क्या होगा? dy upon d. dy कितना है? -45 एंड d कितना है? -3. माइनस माइनस वापस कट होगा. ओके, 3 1 जा 3 15 जा. तो y का value is 15, and let's write the last sentence. X is equals to 12, y is equals to 15 is the solution of given simultaneous equation. The most simplest method out of any law or any method of whatever we have used for solving any equation. This was first sum. Hope you understand. Let's see another problem based on Crammer rule now, children. The sum says that, what is the sum? 3x plus 2y plus 11 is equals to 0. 7x minus 4y is equals to 9. Let's start. Now it's your task. फटाफट. Come on. We'll copy paste first equation लिखते हैं as it is. X और y किधर होना चाहिए? First step, arrange equation in standard form. X और y should be on left side. Constant term should be on right side. So we'll write 3x plus 2y as it is. Plus 11 उधर से इधर आया तो -11. First equation खत्म. Let's use second equation. 7x minus 4y is equals to 9. It's already in a standard form. Okay. Step number 2. Find three determinant d, dx, dy. First determinant क्या आएगा? d. Help me out. d में इधर क्या लिखूंगा मैं? Coefficient of x. इधर coefficient of y. What is coefficient of x? 3 and 7. Coefficient of y. Speak along with sign. 2 and -4. Now solving is very easy. Start. 3 into -4. 2 into 7. 3 4s are 12. Minus की वजह से -12 minus 2 7s are 14. माइनस माइनस प्लस 12 और 14 ऐड किया तो 26.
minus 26 is the answer. Next determinant, what is that? dx. मतलब क्या, नाम क्या है? Determinant of x. कैसे बनाने का? इसको कॉपी पेस्ट करो, ओके? बट इसमें x का कोएफिशिएंट को किससे रिप्लेस करने का? कांस्टेंट टर्म से. व्हाट आर कांस्टेंट टर्म? -11 and 9 रिप्लेस किया. -11 and 9. Now let's simplify this. -11 multiplied by -4, 2 multiplied by 9. So what do we get? 11 4s are 44, minus minus plus, minus 9 2s are 18. 44 minus 18 simply 26. That is second determinant. Next determinant क्या है? dy. Come on, your turn. d को copy paste करो and इसमें coefficient of y को will replace by क्या? Constant. -11 और 9 से. So इधर आया -11 and 9. Let's solve this. 3 multiplied by 9 minus 11 multiplied by 7. 3 9s का कितना आएगा? 27 minus minus plus 11 7s are 77. If I add 7 plus 7 14, 1 carry, 1 plus 2 3, 3 plus 7 10, 1 0 4. So d dx और dy का वैल्यू आ गया. Now use लिखने का क्या सेंटेंस लिखने का? By Crammer's rule. What is rule? X is equals to dx upon d. dx का वैल्यू क्या है? 26. d का वैल्यू क्या है? -26. 26 कट, बट नीचे माइनस है, नीचे माइनस नहीं चलते, ऑप्शन को ऊपर लेके जाओ. -1, तो x का वैल्यू -1. y is dy upon d. dy का वैल्यू 104, d का वैल्यू 26. 104 divided by 26. 26 1s are 26, 2s are 52 का डबल. 26 4s are 104. तो आंसर इज ऑफ कोर्स वापस माइनस ऊपर -4. तो x is equals to -1 and y is equals to -4 is the solution of given simultaneous equation. Hope these two sums are clear to you. Let's check one more problem and one last sum based on Crammer rule. What is the sum? Please read. The sum is 4x plus 3y minus 4 is equals to 0. 6x is equals to 8 minus 5y. Step number 1. Let's quickly revise all the steps. Arrange the equation in standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 4x plus 3y ऐसे, -4 उधर से इधर आया तो +4. नेक्स्ट इक्वेशन कॉपी पेस्ट करते हैं. 6x minus is equals to 8 minus 5y. -5y उधर लेके जाते हैं, क्या बन जाएगा? प्लस 8 उधर ही है, मतलब राइट साइड में ही है, तो is equals to 8. Go very slow. Are you getting? Now step number 2. Find three determinant d, dx, dy. तो फर्स्ट डिटरमिनेंट d कैसे बनाने का? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा? इधर 4, इधर 6. इधर क्या आएगा? 3 and 5. सॉल्व करते. 4 multiply by 5, 3 multiply by 6. 4 5 का कितना आएगा? 20. 3 6 का कितना आएगा? 18. 20 minus 18 2. dx स्टार्ट. dx के लिए कॉपी करो एंड सेम इधर पेस्ट किया. बट dx मतलब डिटरमिनेंट ऑफ x, तो ये कोएफिशिएंट को रिप्लेस करने का, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करने का किससे? कांस्टेंट टर्म से. तो इधर 4 और 6 की जगह पे विल राइट क्या? 4 and 8. That's all. 4 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 8. 4 5s are 20 minus 3 8s are 24. 20 minus 24. 24 minus 24. Sign of greater number. Answer -4. Come on, last determinant dy. कैसे आएगा dy? कॉपी करो सेम डिटरमिनेंट d and इसमें कोएफिशिएंट ऑफ y को will replace by what? Will replace by constant. That is 4 and 8. Let's solve. 4 multiplied by 4 minus 4 multiplied by 6. 4 8s are 32 minus 4 6 are 24. 32 minus 24, the answer is 8. So this gives us the three values d, dx and dy. Abhi please write that sentence. क्या? By Crammer's rule. So what is that Crammer's rule? X is equals to dx upon d. dx का वैल्यू कितना है? -4. d का वैल्यू कितना है? 2. So what do we get? -4 upon 2. 2 1s are 2 2s are answer -2. x का वैल्यू -2. y क्या होता है? dy upon d. dy का वैल्यू 8, d का वैल्यू 2. तो 8 upon 2 कितना आएगा आंसर? It will be 4. So x is equals to -2, y is equals to 4 is the solution of given simultaneous equation. These were the simple sums based on Crammer's rule, children. Thank you very much.